Hello everyone, good evening everybody. I am Sania from Better Wellness Team. I am sure all of you must be keeping good health. Today we are going to discuss a very important topic that is overactive bladder. Overactive bladder, also called as OAB, causes a frequent and sudden urge to urinate that may be difficult to control. The condition is common and distressing and may have a large impact on the quality of life. The condition is common and distressing, as I told you, and the OAB patient feels to pass urine many times during the day and night as well, and may also experience unintentional loss of urine, urgency, incontinence. To throw more light on the subject and guide us on what's right for diagnosis and treatment of overactive bladder, also called as OAB, today we have with us renowned urologist Dr. Anuj Jain from Ludhiana. Dr. Anuj Jain has rich experience in the field of urology and carries out the treatment with utmost precision and efficiency, ensuring that patients' health is in safe hands. He holds the degree of MBBS, MS, MCH Urology and practices in RG Stone Urology and Laparoscopy Hospital, Ludhiana. A very warm welcome to you, Doctor. Yeah, thank you. Thank you for inviting me for a talk here. And I'm obliged, and I feel it should be a good conclusive talk today. We'll discuss on a topic which you have selected is overactive bladder. I would like to throw some light on the overactive bladder, the diseases about the in general about the whole of it. So yes, we can go ahead. Yes, definitely, doctor. And as we are going to discuss a very important topic that is OAB, overactive bladder, my very first question to you is what is basically OAB? How we can define overactive bladder? See, the overactive bladder is basically in the English term word is overactive. So basically means the bladder is working excessively. It should the way it normally works, it is working more than that. So how does it work? Bladder usually it is an organ which will store the urine and it will empty it out when the bladder is full. So overactivity means the normal capacity of the bladder is usually around 400 ml, 500 ml, up to 300 to 500 ml bladder capacity is there. So we get a sensation when we have the bladder is full around 300 ml. So usually every 3 to 4 hourly we used to go to the washroom and we will clear our urine. Overactivity means when the patient is having increased desire to micturate and very soon, very frequently he is desiring. So frequency of micturation, intense desire, urgency also he feels it to be I have to completely pass the urine. I cannot hold it down. These all symptoms due to the and it is at the neuronal level also. Some receptors are there now receptors which will get excited, activated, and it leads to overactive symptoms. So basically, it is very common in day-to-day life. And we come across all age group of patients, young patients as well as old age patients also have these symptoms. Okay, so that is overactive bladder. And when we talk about the symptoms of overactive bladder, are there any major symptoms of OAB? Yeah. So if you come to symptomatology, basically mainly it is the sensation which we get to. It is called as frequency, increased frequency of micturition, and other symptom is urgency. Urgency is when you cannot hold the urine. Normally, whenever we get a sensation to pass urine, we can hold it down. We can, if supposedly the washroom is a far off washroom, and we can hold it back to make it yourself convenient to reach the washroom, and then you can do the act of micturition. But the problem with these patients is overactive symptom is when it becomes overactive bladder, you are not able to prolong your micturition. You're not able to hold it back. You have to immediately rush to the washroom. So first one was frequency, second is urgency, as I explained now. Then the third symptom, it can be perceived in the form of a pain also at times, which we will feel that they cannot hold it back and it has the intense desire and which gets culminated, pain gets relieved when you go and use the washroom. The other symptom which can manifest in our day-to-day life is when we need to get up in the night to pass urine. So it is called as nocturia. So normally up to one time or to two times maximum, young patients and old patients are two times. It is a allowed thing. If it is more than that, that means patient is symptomatic for nocturia, and which is also one of the symptomatology of overactive bladder.
Okay, doctor. So these are the various symptoms of overactive bladder, and as you already mentioned, that there is no age limit or age bar. Am I right that some anyone, young people also and the old age people also Yes. can have overactive bladder? And you see, basically, age group, why I told was in young patients at time, the overactivity symptoms arise. Like we have something called as functional bladder neck obstruction, which is usually in the age group of 30 to 40 age group. And these patients basically they have this frequency urgency symptoms, and at times they have to go to the night also. So these patients at old age, there can be other reasons because of prostate also, there can be overactivity of the bladder. Plus, there can be in females, usually infection is the most common cause for overactive bladder. And then sometimes even in some medications also, some patients who have the medications, they also have at times also. So age is like it can present in early age also, it can present in late age also. Okay. And doctor, when we talk about the causes, as we have already discussed the symptoms, what is basically OAB, and now when we talk about the causes, so what are the various causes of OAB? So if you come to causes of OAB actually it is a very widely present disease. Okay, why I'm saying is this because it is mainly the symptomatology which makes the diagnosis of overactive bladder. It is nothing else. It is mainly all the symptoms put together. It makes the diagnosis of overactive bladder. And if you talk about causes, so what first and foremost is it's very common in case of infections. When you have a urinary tract infections, the bladder wall becomes inflamed, and then you have that frequent symptoms of frequency and urgency. So overactivity, one of the causes is infectious urinary tract infection, and UTI is very common, especially in female population because of the short urethra. They are very predisposed to UTIs. And when it comes to UTI, the symptomatology, apart from fever and chills, it is also in the form of overactive symptoms. They have increased frequency of micturition. They have urgent desire to go to the washroom. These all are symptoms seen in UTI patients. So one cause is urinary tract infections. Second, diabetes is another one very important cause. Diabetic patients usually they have some component of bladder changes, and it leads to frequency symptoms, urgency symptoms, and so bladder the diabetic patients also have a good amount of overactive symptoms. Then, if you talk about this benign prostatic hyperplasia, which is basically an age-related disease in which the prostate becomes enlarged with age due to hormonal changes and all. This is an entity which is commonly seen in males because prostate is only seen in males. So these leads to initial presentation of these patients at time is in the form of overactive symptoms, and later on it progresses to the obstructive symptoms like poor flow and other things of prostate enlargement. And another entity is even in patients who have neurological diseases, example Parkinsonism patients, they are on some drugs which may lead to overactive symptoms also. So this is another because of the drugs which are acting on the muscarinic receptors and all, they also play a role, and they also become a cause for the overactive bladder. Okay, and then what else? Some patients who are on diuretics, they also at times have overactive symptoms. Why? Because they are taking some drugs to increase the urine output. When the urine output will be more, they will obviously the production is more. They have to empty it frequently, and that also leads to overactivity. Okay, so basically, it can be drug induced, it can be because of diabetes, infections, or in patients with benign prostatic hyperplasia. And then in some patients, even with constipation, also they have sometimes, if it is incomplete evacuation of the bladder because of the constipation, loaded colon or loaded rectum, they also tend to go frequently to the washroom to partially empty their bladders. That is not very routinely, but yeah, in patients, some patients of constipation, you might see overactive symptoms as well. And sometimes, as I told, there's something called as primary bladder neck obstruction. These patients, usually in the young age group, they also present with overactive symptoms.
And another patient, sometimes what happens is in patients who have a stuck stones in the lower ureter, they also at time presents with overactive symptoms. That is basically a short-term presentation. When there is a stone episode, pain is there, and then subsequently when they're trying to clear the stone, they might have that frequent desire to pass urine. So that can also present as overactivity. Okay, so that means there are various causes Yes, of OAB, and it will differ from person to person. yes, yes. If some, as you mentioned, that if somebody is having diabetes or UTI, or there can be a lot of causes Yes, due yes. to which OAB can occur. And doctor, what if someone, is feeling like, OAB symptoms? So what a patient should do to reduce the symptoms of OAB? And are there any signs we can say that a person should understand that this is particularly OAB? So basically, what happens is when do you think this is we are dealing with a OAB patient? It is when the patient, the frequency means normally a patient voids up to 6 times in a day. If the frequency is increased, if it's going up 10 times, 12 times in the urine to micturition, that is when we should think why we are voiding so frequently. Then, and every act of void we pass urine, then that indirectly means is, see, if we are going frequently and we are not passing urine, that is what we are dealing with something else. But when we are going every time and we are passing urine, that means there is a component of frequency is there and there's a component of overactivity coming up in picture. Second thing is they might need to get up in the night frequently. So when they're getting up in the night frequently to pass urine, that is another sign of overactivity. They need to realize that something is wrong is happening to our body. And if they have any other adjoining symptoms in the form of fever, chills, any burning while passing urine, or if there is any frequent vaginal discharge also, these also in females at times becomes important to evaluate. They can be secondary, this can be a secondary presentation. In those things also we need to look, there is something pathological disease is there which is leading to the overactivity of the bladder. So this is one area where we need to work on it. And at times these patients usually they will say I go to the washroom every 15-20 minutes, I go to the washroom every half an hour 45 minutes. So normally our bladder is capacity is 300 to 500 ml, we can easily cross 3 hours comfortably sitting, and then after 3 hours we need to do and pass the urine. But if these patients say feels that I have to use the washroom very frequently, that means we are dealing with overactivity, and that is a point where we need to do something about it. And what about the who are this? There's some other causes also in some patients who have history of taking bladder irritants. Now, what is bladder irritant? Bladder irritant is anything which irritates your bladder. So if you're consuming anything which will irritate your bladder, it will lead to overactivity symptoms. Example, tea, coffee intake. If you're taking too much of a caffeine intake, that will also lead to overactive symptoms. So the patient will present in a way that, oh, sir, this is, and especially in patients in winters, these symptoms precipitate because in winters, due to chilly weather, they will be taking frequent cups of tea and coffee to make them keep themselves warm. And in the process, they don't realize that they have symptoms of overactivity. So this is especially in winters, the overactive symptoms really go haywire, and the patients will feel कि डॉक्टर साहब बहुत तंग हो रहा हूँ मैं मुझे कुछ तो then अब जब हम हिस्ट्री पूछते हैं we try to interrogate them and then it comes out कि सर तो 6-7 कप चाय के रोज पी रहे हैं दिन में तो that is where we need to break the cycle कि हमें we would find out the cause. Okay, and sometimes some few patients they are other bladder irritants in the form of chocolate intake. This also can be too much of chocolate, they can also work like a irritant to the this thing. देन सोडास फ्रीजी ड्रिंक्स जो होते हैं अपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं वो आल्सो दे आर आल्सो वेरी वेरी इरिटेंट टू द ब्लैडर सो इन पेशेंट हुज these things intake is high, they also become prone towards going towards overactivity. And the moment you retrieve that dietary component, आप उसको निकाल देंगे डाइट में से बाहर, your symptoms will become okay. So होता basically it's all the nerve receptors अंदर ब्लैडर के अंदर जो nerve receptors हैं
they will उनकी excessive firing will lead to overactive symptoms. So when we take some component in the food which is going to make these nerves fire extra, they will lead to symptoms. Right. That means, proper diet is also important. If somebody is having overactive bladder and, they are drinking too much of coffee or tea, that can also be a bad thing for them. So be careful while drinking a lot of tea Yeah, and coffee as and well. Indians love tea. I know they are big fan of tea, Right. and they don't eventually realize कि बहुत चाय पीने से उनको bladder के भी symptoms आ सकते हैं. They don't realize it at while consuming it. They don't realize, but yeah, long term में वो उनको problem cause कर सकता Right. So everybody knows that we all love chai and coffee. People are now the coffee person as well. But as you have mentioned that long term may it will be harmful for you. And doctor, I am sure that you might have come across a lot of people who are facing overactive bladder, but they take over the counter medication, or someone who has suggested that हमें ऐसा हुआ था तो हमने ये दवाई खाई थी. So how harmful is that if somebody is self-medicating themselves? See, I'll tell you one thing. Self-medication, I not as a doctor, I'm saying in generally कोई भी चीज जिसमें कुछ केमिकल डाला हुआ है उसकी सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज इंजूरियस टू हेल्थ अनलेस इट इज बीन प्रिस्क्राइब्ड और अनलेस you know yourself that this is essentially required at this point of time. तो मतलब जो चीज आपकी ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड है अगर वो कंफर्म्ड है आइदर बाय डॉक्टर और आइदर यू आर इवन इनफ क्वालिफाइड टू टेक अ कॉल कि ये मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, तब तक आपको कोई मेडिसिन बाहर से नहीं लेनी चाहिए. It should be always a prescribed medicine which you should take it. Coming to the OTC drugs, there are some OTC drugs which patients go to the pharmacy and pharmacist and they'll ask for medicines. But प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आपको कॉज नहीं पता है तब तक दवाई भी कैसे असर करेगी. आपने आप पी रहे हो 7 कप चाय के, आपको तो वो पता नहीं है कि चाय के कारण आपको दिक्कत हो रही है एंड देन you go to a pharmacist, he'll give you some medication. That medication will not cause effect unless because you have not treated the cause. So it becomes very, very foremost important when you are dealing with a problem that it has to be addressed on the root cause. कारण ही नहीं पता है तो दवाई क्या देंगे, whether it is OTC or whether it is your self medication part. तो मेरा बोलना आपको ये चाह रहा हूँ कि आप whenever you face these symptoms, try to meet a doctor, preferably a urologist who can deal it in a better way, and preferably get yourself evaluated. अगर किसी टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है तो आप वो टेस्ट कराने में हिचक मत करिए. एंड देन अगर कॉज पता चले, देखो फीमेल्स में कुछ और कॉज रहते हैं, मेल्स में कुछ और कॉज रहते हैं. मेल्स में प्रोस्टेट इज वन ऑफ द कॉज, या फिर कई बार फंक्शनल ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन नाम की एक एंटिटी रहती है, वो भी हमें कैरेक्टराइज करनी पड़ती है. कई बार उसके लिए हमें थोड़े इन्वेजिव टेस्ट भी करने पड़ते हैं जिसको यूरोडायनेमिक स्टडी बोलते हैं. तो ये सब चीजें हैं जो आपकी बीमारी को इलाज तक लेके जाने के पहले कुछ चीजें हैं उसको डायग्नोस करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि यही बीमारी है आपकी, राइट. तो वो चीजें आपको प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में ही प्रोसीड करना है. पहले डॉक्टर से मिलके अगर कुछ टेस्ट की जरूरत है, अगर तो कई बार हिस्ट्री में ही हमें डायरेक्ट कॉज मिल जाता है कि ये कारण है, अब ये कारण को एड्रेस करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बट समटाइम्स कुछ एग्जैक्ट पॉइंटर नहीं होता है तो हमें कई बार कुछ टेस्ट करके भी रूल आउट करना पड़ता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम वी आर डीलिंग विद, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन गिव मेडिसिन. अभी सपोजिटली बात है कि अगर आप सपोज आपको कोई ब्रेन की कुछ और प्रॉब्लम है, पार्किंसंस की इशू है या कोई और मेडिसिन चल रही है, आपकी वो मेडिसिन को मॉड्यूलेट कर देंगे तो आपके सिम्टम्स भी रिजॉल्व कर सकते हैं. तो वो सब चीजें a doctor can only help you out in this managing कि this can be a probable reasons. If we deal it in this way, it can lead to your resolution of the symptom. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग सेल्फ मेडिकेट ना करके इस पर्टिकुलर बीमारी में हम लोग डॉक्टर की सलाह लें. डॉक्टर में भी मैं एडवाइस करूंगा कि बेटर टू मीट अ यूरोलॉजिस्ट
he can understand you in a better way from relation to these particular symptoms. Right, and because an expert better knows that what is wrong and what is right Yes. for you, so do not self-medicate. And if you are having any kind of OAB symptoms, go and refer to your nearby urologist. Doctor, as we have talked about the causes, the symptoms, what is basically OAB. Now coming to the treatment part of OAB, so what are the various options which are available for treating overactive bladder? Yes. So few things I have already discussed in my last this discussion only. Ki, if you know the cause and if the cause is a particular drug or it's a particular entity like if you're taking excessive amount of caffeine, तो अगर तो आपको we know that this is the primary root cause, we can remove that source of irritant, bladder irritant, and we can make the patient's life comfortable. अगर वो उससे हेल्प नहीं होती, कोई ऐसा एग्जैक्ट कॉज नहीं है या फिर कोई और लेवल पे आपकी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ नर्व रिसेप्टर्स आपके ज्यादा आपके वो हैं एक्टिवेट हो रहे हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन आती हैं, जिन मेडिसिन में कुछ कुछ मेडिसिन हैं, अभी आजकल काफी हमारे पास न्यूअर जनरेशन भी आ गई हैं जो काफी सेफ मेडिकेशन हैं, जिनके साइड इफेक्ट प्रोफाइल बहुत अच्छे हैं, उनमें ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं। तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं मार्केट में जिनको हम लोग लिख सकते हैं, एंड डोज एडजस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पहले लोअर डोज से स्टार्ट करके, इफ इट इज सेटलिंग डाउन, अगर इफ इट इज नॉट सेटलिंग वी कैन शिफ्ट टू अ हायर डोजेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंटिटी रहती है कि हम लोग दो दवाइयां मिलाकर लिख देते हैं जो दो तरीके से काम करती हैं, एंड दैट विल मेक योर लाइफ मच मोर कंफर्टेबल, योर ओवर एक्टिविटी सिम्पटम्स विल कम डाउन। तो और अगर ये सब चीजें भी नहीं हेल्प करती हैं, देन देयर आर अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस आल्सो, व्हिच इज बेसिकली आपकी जो ब्लैडर कैपेसिटी है, जो ओवर एक्टिविटी का रीजन बना हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक दूरबीन डाल के उसमें ब्लैडर को थोड़ा डिस्टेंड करने की कोशिश करते हैं, हाइड्रो डिस्टेंशन टेक्निक बोलते हैं उसको। वो टेक्निक यूज कर सकते हैं जिससे कि आपकी ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ जाए। ब्लैडर कैपेसिटी बढ़ गई तो मतलब आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब आपके ओवर एक्टिव सिम्टम्स कम हो जाएंगे। एक एंटिटी और आती है आजकल हम लोग काफी यूज कर रहे हैं, वो है जिसको बोलते हैं हम लोग, एक टॉक्सिन थेरेपी आती है, बॉटुलिन टॉक्सिन थेरेपी आती है, वो भी रिसेंटली अप्रूव हुई है। 5 मिनट्स। सो बॉटुलिनम टॉक्सिन थेरेपी जो है वो थेरेपी ऐसी उसमें हम लोग आपके ब्लैडर के अंदर में मल्टीपल प्लेसेस पे टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं, उसकी वजह से कुछ बॉडी में रिस्पॉन्स आके आपकी ओवर एक्टिविटी सिम्टम्स कम हो सकते हैं। And the last, not the least, but we can even do use form of neuromodulation. Neuromodulation में हम लोग nerves को थोड़ा stimulate करके उनकी जो firing frequency है और उनकी जो activation capacity है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, उससे भी over activity में help होती है। और very rarely if you have a very small bladder, we can उसको हम लोग ऑपरेट करके उस ब्लैडर की कैपेसिटी को बड़ा कर देते हैं, ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी वर्ड यूज करते हैं उनके लिए। तो वो भी एक वो लास्ट रिजॉर्ट्स हैं। पहले सरल भाषा में कुछ जो खाने पीने के पदार्थ हैं जिनसे आपको ज्यादा हो रहा है प्रॉब्लम, वो उनको मॉड्यूलेट कर सकते हैं, और उसके बाद मेडिसिन से मोर और लेस मेजरली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कैन बेनिफिट, एंड इन एडवांस कंडीशंस वी हैव अदर ट्रीटमेंट मॉडल्स जो मैं आपसे ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। तो मुक्ति मतलब बेसिकली दवाइयों से हम इनका बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, पेशेंट की लाइफ को कंफर्टेबल कर सकते ओके, सो दवाइयों से भी। और एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर का भी था कि आर देयर एनी सर्जिकल ऑप्शंस फॉर ओएबी? हैं। सर्जिकल ऑप्शंस जो है, मैंने जैसे आपको पहले भी बोला, सर्जिकल ऑप्शंस हम लोग स्टार्टिंग में नहीं यूज करते हैं, हम लोग पहले मेडिसिन से ही ट्राई करते हैं। मेडिसिन में भी कई फॉर्म ऑफ थेरेपीज आती है हमारे पास आजकल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मीरा बैकग्राउंड है, फिर सोलिफिनासिन मॉलिक्यूल्स हैं, फिजोटिरोडिन मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए हैं हमारे पास अभी जो कि अप्रूव्ड मॉलिक्यूल्स हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं। वो अगर उनको अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं है पेशेंट का, देन ओनली दैट पेशेंट बिकम्स अ कैंडिडेट फॉर सर्जरी। सर्जरी में इनिशियल कुछ थेरेपीज हैं जो बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं कि नॉट दैट मेजर सर्जरी, उसमें हम लोग के पास हाइड्रोडिस्टेंशन थेरेपी है, बॉटुलिन टॉक्सिन थेरेपी है। बॉटुलिन टॉक्सिन अंदर इंजेक्ट, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इंजेक्ट कर देते हैं बॉटुलिन टॉक्सिन, उसके रिस्पॉन्स में आपका ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए, 9 मंथ्स टू 1 ईयर के लिए आपके ओवर एक्टिव सिम्टम्स सेटल हो जाते हैं, बट उनके लिए दोबारा कई मल्टीपल सिटिंग्स करनी पड़ सकती हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट, जो मैंने पहले भी बोला कि ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी नाम की सर्जरी होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लैडर की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कई बार आंत का यूज करके आंत को ब्लैडर से ज्वाइन करके ब्लैडर को बड़ा बना देते हैं। दैट इज ऑल्सो देयर, बट या
that is some few ways of which we can do surgical management. But surgery is a later resort, it is not a primary management. जैसे कि बाकी बीमारियों में कईयों में हम इनिशियली ही सर्जरी बोल देते हैं, इस पर्टिकुलर बीमारी में सर्जरी इनिशियली नहीं बोली जाती है, वो लेटर स्टेजेस पे बोली जाती है. So there are treatment options which are available, may it be surgery or medications. And there's a question from one live viewer that can OAB affect both men and women? Yes, OAB can affect both men and women. However, the causes of the reason behind it is different in both men and women. डायबिटीज जैसे मैंने आपको बोला मेन वुमेन दोनों में हो सकती है, वो भी सकता है. पेशेंट्स मेन पेशेंट्स में कई बार ब्लैडर के जो रीजन होता है वो कई बार आपका प्रोस्टेट ओल्ड एज में 50 प्लस एज ग्रुप में प्रोस्टेट के अर्ली सिम्टम्स में ओवर एक्टिविटी सिम्टम्स भी आते हैं. तो दैट इज वन ऑफ द वे विच पेशेंट्स कैन फेस एंड दे कैन प्रेजेंट टू अस. तो फीमेल्स में भी इट्स अ वेरी कॉमन. फीमेल्स में एक और कंपोनेंट भी रहता है, जैसे कई बार होता है कि इसी की ओवर एक्टिविटी की अगर स्वेयर फॉर्म होती है इनकॉन्टिनेंस. इनकॉन्टिनेंस का मतलब यूरिन बीच में निकल जाना, इतना अर्जेंट हो गया कि हम पहुंच नहीं पाए और यूरिन बीच में निकल जाना. दैट इज अ स्वेयर फॉर्म ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर. इट इज कॉल्ड एज अर्ज इनकॉन्टिनेंस. तो वो सब चीजें रहती हैं, आपको देखना पड़ता है कि क्या कारण है और कारण के अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट मेल फीमेल्स में अकॉर्डिंग टू द जो कॉज हमने ढूंढा है या कोई रीजन हमने कंक्लूड किया है टेस्ट करके या विदाउट टेस्टिंग भी हिस्ट्री में आपको पता चल गया है, उसके बेसिस पे हम आपको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट एडवाइस करते Right. Then, Doctor, how prevalent is OAB in the general population, and may it also affect the quality of life as well? हैं. Definitely, it is common and it is actually depends upon the age group. ओल्ड एज में ये सिम्टम्स थोड़े मोर कॉमन रहते हैं, जैसे मेन विद प्रोस्टेट दे हैव मोर कॉमन, है ना. यंग पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ प्राइमरी ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, तो एज ग्रुप वाइज इंसिडेंस का डिफरेंस रहता है कि ओल्ड एज में थोड़े रिलेटिवली ज्यादा इंसिडेंस के चांसेस रहते हैं, जबकि यंगर एज ग्रुप में रिलेटिवली बट प्रेजेंटेशन सब में हो सकती है, बट बिकॉज एक वो एज बाय एज आपका फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंस का डिफरेंस तो रहता है. अभी जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मींस हाउ कैन यू Quality of life, how it impacts. क्वालिटी ऑफ लाइफ. या तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का इसका आंसर ये है, देखो ऑब्वियसली मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ, अब मुझे बात करते करते मुझे वॉशरूम जाने का हो जाए, तो हाउ हाउ अनकंफर्टेबल viewers will be, how uncomfortable the person sitting up front will be. The social plus सिंस इन ओल्ड एज पीपल उनको चलने फिरने की वैसी दिक्कत होती है और उनको इतना फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जाने में बिकॉज ऑफ देयर नी इश्यूज इट बिकम्स वेरी वेरी टायरिंग फॉर देम एंड एट टाइम्स दे आर नॉट एबल टू रीच द वॉशरूम एंड दे विल लीक इनसाइड द, उनके कपड़ों के अंदर यूरिन निकल जाता है एंड इट इज अ वेरी वेरी बिग सोशल एम्बैरेसमेंट आल्सो, प्लस पर्सनल लेवल पे भी आपको बहुत अच्छा फील नहीं होता है. तो मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली गेट्स अफेक्टेड व्हेन इट कम्स टू योर प्रोडक्टिविटी, when it comes to social acceptance, when it comes to execution part of the कि बार बार जाना पड़ रहा है उसका एग्जीक्यूट करना भी आपको मुश्किल होता है. तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स योर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड you need to at times people tend to avoid go traveling because they think कि हमें तो गाड़ी रुकवा कर वॉशरूम जाना पड़ेगा. तो आप समझ सकते हो कि it has a lot of mental social lot of trauma to the patient. वो patient बाहर जाने से घबराता है कि नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, अगर वहां वॉशरूम नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा. तो ये सब चीजें लूम करती हैं उनके ऊपर और वो ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती है. तो वी शुड बी इन अ मतलब हमें जो भी है ये इसका प्रॉपर एड्रेसल करवाना चाहिए ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना इम्पैक्ट ना हो. Right, and when the solutions are there, हमें definitely जाना ही चाहिए because treatment options available हैं, everything is there. Doctor, also one question which has come, that can hormonal changes affect the onset of OAB? सी एज सच अगर आप मुझे बोलें तो हार्मोनल चेंजेस से नहीं डिफरेंस होता. बेसिकली होता क्या है कि जैसे आपका पोस्ट मेनोपॉजल अराउंड द मेनोपॉज के टाइम पे आपके हार्मोन्स कम होने शुरू होते हैं, तो आपके बॉडी में वैसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से कई बार आपके जो यूरिन की जगह है वो पैसेज के ऊपर भी इफेक्ट होता है, वो पैसेज नैरो हो जाता है, ठीक है. इसको यूथरस स्टेनोसिस बोलते हैं हम लोग. ये विद
जैसे ही आपका मीनोपॉज के पोस्ट मीनोपॉज आपका एज ग्रुप शुरू होता है, तो इस हार्मोन्स चेंज ओवर की वजह से वो अब उसके भी कई बार सिम्टम्स इनिशियली मैनिफेस्ट करते हैं ओवर एक्टिविटी के फॉर्म में। जब आपका जो सपोजली ये आपका ब्लैडर है और उसके नीचे का जो ओपनिंग है वो टाइट हो गया, तो ये ब्लैडर को बार-बार एम्प्टी करना पड़ेगा जाकर उस अगेंस्ट दैट ब्लॉकेज। सेम कॉन्सेप्ट इज फॉर प्रोस्टेट आल्सो जब हम लोग मेंस की बात करते हैं। फीमेल्स में ये पोस्ट मेनोपॉजल में मतलब पेरीमेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में ये थोड़ा कई बार वो यूरेथ्रल स्टेनोसिस होने का डर रहता है, उसकी वजह से हार्मोनल इन्फ्लुएंस के अंडर वो आपको इंडायरेक्टली ओवर एक्टिविटी के लिए वो लैंड अप कर सकते Okay, and as we have discussed about the causes, the symptoms, the treatment options which are available, before we end this very informative live session, any advice you would like to give to all the viewers? हैं। यस, सो बेसिकली बीच में भी एक और क्वेश्चन आई कुड सी इट वाज कि वो स्लीप पैटर्न को इम्पैक्ट करता है कि नहीं करता, तो आई जस्ट एड्रेस बिफोर गिविंग माय लास्ट कमेंट्स ऑन द एडवाइसेस। स्लीप पैटर्न को डेफिनेटली अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको बार बार उठना पड़ेगा, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, नींद टूटेगी, तो आपका नेक्स्ट डे का साइकिल भी खराब होगा। तो जितनी बार आप रात को उठेंगे उतनी बार आपका स्लीप साइकिल ब्रेक होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप डिक्रीज हो जाएगी, आपको नेक्स्ट डे आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। तो ओए बी इसलिए उसके कुछ कुछ एडवाइजेस क्या रहती हैं, मैं आपको वेरी क्लियर क्रिस्प बोलता हूँ। सबसे पहले, इन जनरल टी कॉफी इनटेक जो कि हमारे इंडियन पॉपुलेशन में काफी ज्यादा है, उसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको कम करना है। जो हमारे ये जो डाइट में और क्या रहता है, जैसे अपने ये जो सारी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, फ्रीजी ड्रिंक्स हैं, सोडाज हैं, ये सब चीजें भी इरिटेट करती हैं, तो इनको कम करना है। फिर कुछ पेशेंट में चॉकलेट इंटेक्स एंड और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं ब्लैडर इरिटेंट्स में, वो उनको कम करना है हमें। कुछ पेशेंट्स को बहुत ज्यादा चिली इंटेक से भी, मतलब मिर्च मसाला ज्यादा लेने से भी उनको ये ब्लैडर इरिटेट होता है, तो वो भी आप पर्सनलाइज्ड है, किसी को इस तरह हो सकता है, तो वो भी आपको मॉडिफाई करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वाटर इनटेक। अगर आपको रात को बार बार उठना पड़ता है बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिविटी, वाटर इनटेक सोने से 3 घंटे पहले, 2-3 घंटे पहले आपको कम करना है। यू हैव टू डिक्रीज द वाटर इनटेक 2 to 3 hours prior to your sleep, so that जो भी आपने पानी पिया है वो बिफोर गोइंग टू स्लीप आपको वो पानी बॉडी में से निकल जाए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ताकि आपको रात को बार बार ना उठना पड़े। ठीक है? अगर आपकी कोई डाययूरेटिक की मेडिकेशंस हैं, अगर हम उनको अपने डॉक्टर की सलाह लेके, कार्डियोलॉजिस्ट की या जो भी जिसने भी लिखी है आपको डाययूरेटिक मेडिकेशंस, नेफ्रोलॉजिस्ट ने, उनसे सलाह लेके आप अपनी डाययूरेटिक्स को दिन में शिफ्ट कर लीजिए इवनिंग में लेने की बजाय, ताकि आपकी रात को क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए, आपको सोने, आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो यूरिन पास करने के पॉइंट से। देन हमेशा आपको सोने से पहले यूरिन पास करके सोना है। दैट इज यू मेक अ हैबिट। It is otherwise also recommended, not only in overactive bladder patients, generally भी as a normal human being भी आपको सोने से समय यूरिन पास करके आपको बेड पे जाना चाहिए। और वाटर इनटेक जो है, इट हैज टू बी मॉडरेट वाटर इनटेक, बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं। तो मॉडरेट वाटर इनटेक की डेफिनेशन क्या होती है? यूजली हम लोग क्या बोलते हैं, अराउंड 2 to 2.5 लीटर्स इन विंटर्स एंड 500 ml प्लस इन समर्स। तो 2.5 से 3 लीटर आप समर्स में पानी पीजिए मिनिमम, और विंटर्स में 2 to 2.5 लीटर्स पानी पीजिए। इसमें मैंने कार्डिक पेशेंट्स उन सबको नहीं इंक्लूड किया है। उनमें आपको अगर कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वो आपके डॉक्टर ने आपको बता रखी होंगी। जिनके हार्ट की पंपिंग कम है तो उनको लिमिटेड वाटर इनटेक, या फिर किडनी फंक्शन कम है, डीरेंज्ड है, तो उनको आपको अगर बता रखा तो आपने अकॉर्डिंगली वो फॉलो करना है। बट फॉर रेस्ट ऑफ ऑल द व्यूअर्स, 2 to 2.5 liter of water intake is good amount of water intake for winters, and 2.5 to 3 liters for in summers for majority of the patients. And this will take care of your body needs as well as for all the other risk factors which we are talking Okay, so about. 2 And to last not 2.5 the in least, winter and 2.5 to 3 liters in winters and 2 से 2.5 लीटर इन 2 to 2.5 इन विंटर्स, और समर्स में 500 ml प्लस, क्योंकि समर्स में आपका स्वेटिंग की वजह से आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एंड एक और एडवाइस मेरी जो लास्ट व्यूअर्स को रहेगी, कभी भी झिझकिए मत जब आपको लगे। जस्ट आपको एक बार ओपिनियन लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इफ यू फील यू हैव ऑल दिस सिम्टम्स जो हमने आज डिस्कस किए हैं ओवर एक्टिविटी के,
feel free to go and meet a doctor, preferably a urologist, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर देगा। और हो सकता है सिर्फ बात करने से ही आपके प्रॉब्लम पता चल जाए और आपका सोल्यूशन हो जाए। जरूरी नहीं होता कि हर चीज में आपको टेस्ट टेस्ट जहां रिक्वायर्ड होंगे वहां टेस्ट भी करवाते हैं हम लोग, या आपके डॉक्टर करवाएंगे। बट प्लीज डोंट फील हेजिटेटेड कि हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो नेगेटिविटी के साथ मत सोचिए। कई बार आपको मिलने से ही आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता Right, and it's better that आप डॉक्टर के पास जाए rather than self treating yourself, self medicating yourself, because they are expert, they know the best. And doctor, any takeaway message for all our viewers? है। टेक अवे मैसेज इज ट्राई टू बी रेगुलर विद योर डाइट, ट्राई टू बी रेगुलर, and if you feel something is wrong in your diet, try to correct it. Then good voiding practices, try to defecate routinely, try to take water intake whatever is recommended, don't need to take too much of water, and don't need to take less of water, that will lead to further problems. Then if you have these symptoms, try not to avoid a doctor, try to just meet and try to sort it out. Fourth thing is there are medicines which can make your life very comfortable in a patient with OAB, and they are some advanced surgical procedures, if required, if indicated, can make your miserable life better. Okay, so keep yourself hydrated, not too much of water, not less water, and do not self medicate. And thank you so much, Dr. Anuj Jain, for your valuable time. And it has been a very informative session for our viewers. Thank you, thank you, thank you. It was nice interacting with you all people. So I hope my viewers would have benefited with my discussion on this YouTube page live. And looking forward, if you have any doubts, you can always approach me, and we can. I'm always there to answer your queries. Yes, definitely, Doctor. And we also really look forward for many more such sessions in the coming time as well. Thank you. Thank you so much, Doctor. And thank you so much, viewers, for an excellent participation. For more information and updates, stay connected on our Facebook page, that is Bladder Wellness. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you, and good day to all.